Fifth, you said Rafale, sir. Rafale is either 4 or 4.5, sir. 4.5, yeah. 4.5, sir. Yes. Fifth generation कौन सा लेना चाहिए? See, अभी एरो इंडिया है, Sir. तो ये सब लोग आएंगे. Su-57s will also come. Sir. And the Americans will also. So we could look at these aeroplanes. Your personal opinion, sir. I think so, to go with Su-57s. Why, sir? It's तो रशिया भी इतना यूज नहीं कर रहा सर हाँ, नहीं कर रहा इतना, बट ऑफ द शेल्फ अगर आपको खरीदना है इस वक्त विदाउट एनी दिस थिंग, आई थिंक सो वो बेटर रहेगा. वाई सर? कंपैटिबिलिटी उसका जो Su-30 से काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, और उसका जो रशियन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस जो सपोर्ट सिस्टम है, दैट वुड बी, बिकॉज हमारे पास बारिंग रफाल के 2 स्क्वाड्रन इस टाइम पे जैगुआर बहुत पुराने हो गए हैं. हमारे पास कोई वेस्टर्न फाइटर नहीं है इन एक्टिव सर्विस. मिराजेस केम इन 80s, सो मेन स्टे इज Su-30s. So that is my personal take. You don't think we should get the F-35, sir? We could look at it because it's tested and a dozen countries are using it. We can look at it. I'm not saying we can look at it. Sir. Between these two, they'll all be coming now next month for showcasing their products at Bangalore. Sure. That is from 10th to 14th of February, the Aero India. But we could look at these 2-3 options. That is because SU आपने Su-57 की बात करी. It does not even, I believe, it doesn't have one functional squadron also as of now. Yes. That's what I believe, sir. But they exhibited and they're using it in this conflict. They exhibited in Hawaii Air Show also. Sure. This thing. So I'm sure Russians are actively involved in conflict for last many years. Starting from Crimea in 2014. Yes, sir. And in Syria. So they see a person who is actively involved in conflict. Their industry at peak of Second World War, I was reading somewhere, the Germans were producing 30,000 aircrafts per year. See, necessity is mother of invention. So they had stopped all industries. The company which was manufacturing cars, automobiles, other things, they were manufacturing aeroplanes. So even in Japan, yes. Mitsubishi, yes. जो आज washing machine बनाती है, गाड़ियां बनाती है, Mitsubishi was making the Zero fighter, sir. Correct. तो जो कामेकाजी सुसाइड पायलट्स वो मित्सुबिशी बनाती थी. तो रशियन जो इंडस्ट्री है इस वक्त इज गियर्ड अप बिकॉज 2022 से तो लड़ाई चल रही है उनकी, एंड दे वुड बी इवॉल्विंग इन माय ओपिनियन. They would be evolving. Chaliye, sir. So Su-57 is one thing which we could talk to Russia, and they'll be happy to set up a manufacturing there. Russia के साथ पुराने रिश्ते हैं, so that should not be a problem if we decide to go ahead now. But see, 4.5 also will do. What I'm saying is at this stage, even see, because हमारे पास सब चीज सेट है, 2 squadrons already operational हैं. अगर यही और ले लें, मतलब तो हमारे को जो ट्रेनिंग एंड सेटअप का जो पेन है इनिशियली, उससे बच सकते हैं. सर इशू ये है कि दिस डिसीजन वी शुड हैव टेकन अर्लियर. अब हुआ ये है कि हमने वी वर द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर्स फॉर रफेल, सर. इसके पहले रफेल अपार्ट फ्रॉम द फ्रेंच एयरफोर्स नोबडी यूज्ड इट, सर. वी वर द फर्स्ट वन. आफ्टर अस there is a deluge of countries or orders for the Rafale, and now before 7 to 8 years Rafale can give you nothing, sir. Correct. उनकी ऑर्डर बुक है. अभी मैं कह रहा हूँ, अभी एक साथ कोई भी देश इतने जहाज नहीं दे पाएगा इस टाइम फ्रेम में जो हम मांग. आपने 8 स्क्वाड्रन बोले ना सर. लेट्स से टुमारो the air chief said okay, done. He has spoken to the रक्षा मंत्री. PM says good, go ahead. आपने 8 स्क्वाड्रन, वो 8 स्क्वाड्रन सर आज वो देगा 2035 में सर आपको पहली स्क्वाड्रन. His first squadron you might get in 2035-36, a first squadron. और फिर पता नहीं 40, तब तक तो Chinese will start making 7th generation, 8th generation fighters.